Hi everyone. Good evening, good afternoon from wherever you are watching this. If you are in my time zone, so good afternoon if you are from India, which is majority of the case. So good evening. Noon from wherever you are. So how are you guys doing? Again, we'll keep this very interactive like yesterday. So make sure you interact with me, write everything in the chat. So yeah. Hi Dhruv. Hi Akash. Hi Adarsh. So, hi Rishi. So, first of all, how many of you were able to solve today's question? Let's see how many of you are there who solved the questions. Hi Ritu. Hi Pankaj. Hi Rishi again. Hi Akash. Good to see people repeating. I know Rishi. I know Akash. Hi Surbi. Done 3-1 left. Okay. So, were you not able to solve it or did you not try it? Akash and Gitish both. Hi Aparna. Sorry, Rishi and Gitesh. Hi Anushka. Hi Kaval. Kanwal. Sorry. So I think we can get started. First of all, again, thank you so much for joining in. आज है so we are on day 2 now. We shared 4 questions. I'll share the like the name of the questions. Square of a sorted array. Buy best buy to buy and sell stock to. This is a continuation of what we solved yesterday. So good thing. Then find pivot index. This is not the binary search wala pivot index. This is a different question. Then the last question is majority element. So yeah, we'll discuss all for today. Okay. Hi, unfolding code. That's a different name. Nice. Madhu, today we'll be discussing about day 2 questions. So if you finished day 1 question, um, like if you haven't finished day 2 questions, please try that out. We'll try to solve those today in the call. If you want to watch yesterday's video, that is present on our YouTube channel, so you can definitely check that out. That's okay, Adarsh. You can start today. So I'll try to answer this question. Like I got asked at least 7, 8 times or 10 times from the morning. So can you start the challenge from today or tomorrow? So the answer is yes. You can start some days late. That's okay. In fact, you can also start on 31st day or 16th day of the challenge or whatever, like n number of days. The only change that will happen is you will not be eligible for that particular reward. That's it. It's not going to have a major impact. In fact, especially for the first 5 6 days, it's not going to have an impact as long as you are able to cover those things. But it does not mean that you do it every single time. Like what it means is you solve 10 days of question in 2 days, and then you can basically rest for 10 days. That's not going to happen because I've been stating this, like I've said this tens of times. Consistency is more important than a burst of motivation, a single burst of motivation. Secondly, the biggest difference that it will bring is like it will build a habit. It's not going to be a one-off thing even after the challenge. So try to build a habit so that when this challenge is over, your life is not going to get like sorted within 75 days. So you this challenge is a good way or initiator of uh, a good habit building process. So try to use that, try to use this challenge, and try to build a habit by solving question every single day. So yeah.
फैक्ट फॉर यू सर, ये चाइज कंटिन्यू होना चाहिए. आई डोंट नो ये चाइज का मतलब क्या होता है. चाइज चीज से. Okay, so let's do one thing. Let's jump right into the question because 5 minutes already हो गए हैं. So let's directly jump into the question. So first question of the day is square of the sorted array. Let me start sharing my screen as well. Okay, I hope you guys can see the screen. Let me zoom in. Last time this was a common feedback. So the question states the question states you have been given a sorted array. You have already been given a sorted array, and this array can contain both positive and negatives. Now, what you need to do is you need to return a sorted array of square of these numbers. तो इतना ही सिंपल है कि एक ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसका सॉर्टेड एरे का स्क्वायर करके बनाना है, रिटर्न करना है, एंड जो आउटपुट होगा वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, राइट? सो या सो नितिन, द लैंग्वेज दैट विल, आई विल नॉट यूज एनी लैंग्वेज. मैं कोड नहीं करता हूँ. I don't code, I don't write code or share code. All I do is I just share logic with you so that you can go back. Whoever has not solved this question, you can go back and code it yourself. ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, and I will always say this. Even if you have to look at the answer, even if you have to look at the solution, even if you have to watch a video, never watch someone else's code. अपने आप खुद से कोड करो उसे अपनी लैंग्वेज में. जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, वॉट एवर. अगर वो एलिट कोड पे सपोर्टेड है, करो उसको. दैट्स इट. So first of all, how many of you were able to solve this question? We'll start with the basic question. How many of you were able to solve this question? Nice, Akash, Aparna. Who else? Come on, guys. Surbhi, Rishiman, Gitesh. Good, good, nice. Sanjeev, again, Akash, Saksham, nice. So basically, it's good. Like if you have been able to solve this. If you are not able, if you haven't been able to solve this question, this is the time that you learn how to do it. So first of all, इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो why can't I just square it and return it? Will it not return the sorted array output? Why is that a problem? Nitin says logically done. So Nitin, first of all, there is no such thing as logically done. Like it is solved or it is unsolved. जब तक आप उसको submit नहीं कर देते ना, it's not solved. As simple as that. You have to solve it while after writing code, and you have to submit it. That's what solved mean. Before that, the question is unsolved. So keep that in mind. I've made that mistake in my life. I've made that for 3-4 years. I got rejected from Amazon, Google, once Microsoft, all because कि मैं कोड नहीं कर पाया था. I could solve any question in 7, 8, 10 minutes, but when it comes to writing code, I used to take a lot of time, so I got rejected. So a question is solved only when you submit the question, when you write the code. So never leave it as is. So this is a very big piece of advice that I give everybody. Yeah. So the biggest challenge is negative numbers. तो नेगेटिव में क्या होता है, जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, बेसिक मैथ का रूल, इट बिकम्स पॉजिटिव. द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. Square of unless like normal natural number is positive, we are not talking about imaginary numbers. So square of any number is positive. Now what it means is
कि अगर मैं -4 और -5 को स्क्वायर करूंगा, -5 इज स्मॉलर, -4 इज ग्रेटर, बट जब उसका स्क्वायर करते हैं तो -5 का स्क्वायर बड़ा होगा -4 से, which you can see here as well. -4 और -1 में -1 is greater, -4 is smaller. But when you square it, -4 into -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. अब कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा है. तो it means when we sort it, when in the output 16 will come later. Right? So ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसकी वजह से दिस क्वेश्चन बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी. जो भी पॉइंट है यही है, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ विल वी सॉल्व इट. तो व्हाट इज द ब्रूट फोर्स दैट कम्स टू योर माइंड? पहला सोल्यूशन क्या है? सिंपल. सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज जस्ट स्क्वायर इट एंड सॉर्ट इट. सो स्क्वायर करो और एरे को सॉर्ट करो, काम खत्म हो गया. सो व्हाट, हाउ विल इट वर्क? 1 0 9 and 100. The next stage is sort it. सॉर्ट के बाद क्या हो जाएगा? 0 1 9 16 100. सिंपल. अगर मैं ये करूंगा तो इट विल वर्क, राइट? नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया, what is the time complexity of the solution? In the meantime, I'll keep looking at your comments. Run a loop, square. Yes, that's correct. Roshan, Adarsh, correct. Roshan, again, time complexity also correct. Adarsh, Akash, correct. Sanjeev, correct. Saurav, I'm a beginner today. I go through this. Yes, you can directly talk to me as well. You can ping me on Discord. I don't mind people reaching out to me, so no worries. Adarsh Pandey, n plus log n. Think about it again. What is the time complexity of a sorting algorithm? It's not log n, it's n log n. So n plus n log n, which is in fact of n log n. So basically ये n log n का solution हो गया without any extra space. Now, how can we optimize this? One thing is, can you say कि जब भी हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई, -5 -4 -3 1 10 12. कैन आई से कि जो भी मेरे, क्या कर रहा हूं मैं, सेम क्या, कैन आई से कि जब भी मेरे नेगेटिव नंबर को मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर ऑफ दीज आर इन रिवर्स ऑर्डर सॉर्टेड. सॉरी, जो ये स्क्वायर होंगे वो सॉर्टेड होंगे रिवर्स ऑर्डर में. लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एंड जो मेरे पॉजिटिव नंबर है वो तो ऑलरेडी स्क्वायर्ड ही होंगे करेक्ट तरीके से. सो इफ माय नेगेटिव नंबर्स आर स्क्वायर्ड इन अ सॉर्टेड एरे, इट विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, वेयर एज पॉजिटिव वाले करेक्ट ऑर्डर में होंगे. इज दैट अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन? Kanwaljit, I'll come to that after I'm done with this. I'll try to clear it for you for both the solutions. So since I can say that, it means कि यहाँ पे मेरे sorted हैं रिवर्स ऑर्डर में, वेयर एज फ्यूचर वाले जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे sorted है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ कैन आई से कि यहाँ पे एंड ऑफ द एरे में सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर स्टार्ट ऑफ द एरे में सबसे बड़ा नंबर होगा? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में तो अगर पॉजिटिव है इसमें, तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ही सबसे बड़ा स्क्वायर हो सकता है, और नेगेटिव का सबसे पहला नंबर ही सबसे बड़ा स्क्वायर हो सकता है, राइट? सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी विल टेक दीज टू एंड इनमें स्क्वायर करके जो भी बड़ा नंबर आएगा विल जस्ट पुट दैट, एंड उस अगर ये बड़ा है तो विल इंक्रीमेंट द काउंटर. इफ दिस इज bigger, will decrement the counter. We'll use two pointer approach in this basically. So we have 2 pointers. First
is at the beginning of the array and second is at the last of the array. And why are we doing this? Because we know कि ये monotonously decreasing हो रहा है और then ये monotonously increasing है. We know कि पहले एरिया में पहले पार्ट में it is monotonously decreasing and then monotonously increasing. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर हमेशा ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे आपका सीरीज है या तो मोनोटोनियसली डिक्रीजिंग हो रही है या मोनोटोनियसली डिक्रीज इंक्रीजिंग है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट इट शुड नॉट बी लाइक zigzag. तो इस दिस इज द ओनली प्लेस वी कैन यूज टू पॉइंटर. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. It will be very useful for you in solving questions. Now, what I do is, since मेरा 12 बड़ा है, square of 12 is greater, I add this, I decrease my j pointer. So I is 0, j is 5. Now, I decrease my j pointer. 10 और 5, कौन सा बड़ा है? What will be the biggest number? लाइक स्क्वायर किसका ज्यादा होगा, 5 का या 10 का? -5 का या 10 का? 10, राइट? तो 100. देन 1 एंड 5 में किसका ज्यादा होगा? 5 का, ऑब्वियसली. देन 25. it becomes 3, it becomes 1 now 4 and 1 is compared. 4 and 1 is compared. किसका होगा? 4 का. तो 16 ऐड किया, 25. देन 3 and 1 में किसका होगा? 3 का, 9. देन 1 and 1 लास्ट होगा ये. जब भी इक्वल हो जाएगा, दिस इज द लास्ट एलिमेंट एंड वी हैव टू पुट इट. ऑल वी नीड टू डू इज बेसिकली, अगर मेरा ये रिजल्ट एरे है, लेट्स से n साइज है, सो एंड k विल बी n-1, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट से पुट करते हुए चल रहा हूं, राइट? सो रिजल्ट ऑफ k इज इक्वल्स टू whatever bigger math dot max of, और इनफैक्ट k माइनस माइनस, ताकि बाद में करना ना पड़े, math dot max of nums I square और nums j. एंड अकॉर्डिंगली हम लोग I और j को रिड्यूस कर देंगे. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू. Is this clear? And what we do here is, while I is less than equal to j, that's all you need to do. Simple. Any doubt on this question? कोई भी जिसको भी डाउट है, डोंट फील शाई. दिस इज अ पॉइंट. वन गुड थिंग दैट Kanwaljit said is like time complexity clear नहीं है. तो I will go back and I will explain कि क्यों वो time complexity जितना हमने discuss किया क्यों है वो. If there is any doubt, just let me know. I'll clear it for you. So now let's go back to this time complexity और फिर उसके बाद आते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? Square. तो exactly क्या कर रहे हैं? Iterate on array and square, then sort the array. This is what we are doing here in the brute force. Right? Iterating में कितना टाइम लगता है? Kanwal, how much time does it take to iterate on an array? So it takes of n, and this takes n log n. So now, since ये दो हम बाहर एक step by step process कर रहे हैं, this is not going to be a nested loop. This is going to be two different loops, right? So this becomes n plus n log n, which in fact is n log n, क्योंकि जब आप बिगर नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो बिगर वाला लेते हैं, राइट? नाउ लेट्स गो टू दिस सॉल्यूशन. उससे पहले आई थिंक देयर आर रेलेवेंट क्वेश्चंस व्हिच आई शुड आंसर. सर, व्हाई वी क्रिएट एरे इन लूप
it should be outside of loop in. What do you mean, Roshan? Can you clear your question one time, please? In the meantime, I'll take other. Is there a way to do it in place? So in place में नहीं हो सकता है इस तरह से, because if you do it in place, this will jumble up. It is very hard to do it. I did not solve it in place, and in fact, this is the resultant array, and this is not counted as an auxiliary space. So I tried to solve it using in the same array, but I could not. So I don't know if there is a solution, but अगर वो होगा भी तो it's going to be really complicated code. Since this is an easy question, I did not do it. Now let's talk about this, the time complexity of this. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? I को 0 से शुरू कर रहे हैं, J को n-1 से शुरू कर रहे हैं, और उसी टाइम पे ब्रेक कर जा रहे हैं as soon as we figure out कि I and J क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को. तो what will be the time complexity of the solution? Roshan, think again. Madhu, I and J are incremented and decremented. I did not do it here in the code. ये बस sample code के लिए लिखा था. If you were there earlier, so I was just iterating on it. That's it. So I and J will get incremented and decremented as per like the bigger value, whichever is the bigger value. Correct. So the time complexity of this is O of n, not n by 2, because it will iterate on each and every element. Now, Akash, you're saying space complexity is O of n. So it's debatable. Since this is a resultant array and you have to pass it as a result, some people call it auxiliary space, some don't. But if you see, I will say it's not an additional space complexity. But yeah, overall you are taking additional like ON space for sure. Any doubt on this question, guys? This is done. So any doubt on this question before we move on to the second question? Okay, I'll take it as no. Only one guy said no doubt, so I'll take rest or also as no. So let's go to the second question, which is, let's take an easier question first. We'll come to the pivot. Yep. So guys, the next question that we have is find pivot element or pivot index. So pivot index kya hai? At the time where sum of left of this index is equal to number on the right of this index. So pivot index is index where the sum of all the numbers strictly to the left of this index is equal to the sum of the number strictly on the right of this index. Right? If there exists more, we have to return leftmost pivot index. Sorry. So let's see. Here 1, 7, 3 and 5, 6. So this what is the left, the index is output is 3, तो ये output है. इसका मतलब क्या है? ये 3 and ये 2. You cannot involve that particular number. You have to make sure of that. Okay. So now 173 is 11. 5 plus 6 is also 11. So that is the answer. There can be a case where we don't have a pivot number, so we return -1. I think it should be given here. Yes, -1. In this case 0 because right में 0 है और left में भी total 0 है.
So there is no element, तो इसलिए 0. So this is the question. So how many of you were not able to solve this question? नॉट वाले बताइए मुझे, कौन कौन किस किस को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एंड ऑल्सो हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इन कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस? ओके, गुड टू नो कि है कुछ लोग जिन्होंने नहीं सॉल्व किया. सो लेट्स डू दैट. Let's try to solve it. First of all, we'll try to solve it using an extra space. Okay, Adarsh, for you, I'll reiterate again the question. The question is, आपको एक array of integer दिया है. You have been given an array of integers. You have to return a point. एक ऐसा इंडेक्स बताना है जिसके लेफ्ट ऑफ दो दैट इंडेक्स के जितने एलिमेंट है उसका सम, और जो राइट में है उसके एलिमेंट उसका सम शुड बी इक्वल. ये होता है पिवट इंडेक्स का मतलब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में. सो ये क्वेश्चन है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है. So Akash is saying he did not read the question properly. ठीक है, कोई बात नहीं. So it happens a lot of time. I will suggest कि इस तरह की मिस्टेक्स ना इंटरव्यू में मत करना, बिकॉज उसके बाद जितना फ्रस्ट्रेशन होता है ना उतना फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होता. तो इंटरव्यू में मत करना, प्रैक्टिस करते टाइम कभी कभी करो, बट उसके बाद एक्चुअल इंटरव्यूज में मत करना. नाउ लेट्स गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस. किसी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट का, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू यूज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ब्रूट फोर्स क्या होगा? इस पॉइंट पे लेफ्ट में जितना समय और राइट में जितना समय, अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूं और वो सेम है तो इट इज गुड फॉर मी, राइट? आई कैन इटरेट यूजिंग टू एरेज. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन विल बी की, लेट मी टेक इन here. So at any point I can go to from 0 to I, from 0 to I minus 1 and I plus 1 to n minus 1 inclusive. If I just iterate on these and try to calculate sum for all, whenever these two are same, I can say this is my pivot point. Is that correct? Can I say that? Is that correct? So that's all I do. Right? So now, if I can do that, basically, at any point, what do I need? I need, तो एक बार इसको for loop में लिख के देखते हैं. Left sum equals j equals 0 to I minus 1. Right? Similarly, यहाँ पे let right sum as well. If left equals right, return I. Right? This is all I need to do. Now, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, क्योंकि एक बाहर वाला लूप हो गया और एक फिर हर एक बार में पूरा का पूरा एरे इटरेट कर रहा हूं हर एक उसके लिए, तो वर्स्ट केस में n स्क्वायर होगा. नाउ कैन आई समहाउ कैलकुलेट दिस प्री हैंड? एक बार मैं पहले से कैलकुलेट करके रख लूं लेफ्ट सम और राइट सम, तो मैं
ये लूप अवॉइड कर सकता हूं, राइट? तो हिमांशु इज ऑल्सो मेकिंग द सेम पॉइंट. सो द नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन इज कि मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लूं और एक कहीं पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम में स्टोर करके रख लूं. So somehow I'm not going to write proper code. I'm just going to iterate on it. So in हो ही गया, ये कोड ही हो गया पूरा. So right sum will be n to 0. Right? ये हो गया मेरा right and left sum, and at a point when I have left and right equal, I can return. Right? As simple as that. एक्स्ट्रा एक बार मैंने कैलकुलेट प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम करके रख लिया, एंड कर दिया. Then what will be the time complexity of the solution? Correct. So Himanshu is saying we have optimized this to O(n), and which is correct. So the time complexity of this is O(n), but space is also O(n), 2n in fact. So we are taking 2n space. Right? Now let's do one thing. Can I ignore one of the array? Yes. लेफ्ट सम मैं ऑन द फ्लाई भी कैलकुलेट कर सकता हूं. राइट सम सपोज मैंने कर दिया. लेफ्ट कैन आई डू समथिंग लाइक, ये 1 से शुरू करेंगे और 0 वाला टेस्ट फॉर 0 कंडीशन हियर. राइट? अगर मैं ये कर दूंगा तो अगेन लेफ्ट मेरा हर बार मेरे पास लेफ्ट मिलता जा रहा है, एंड एट द मोमेंट आई हैव लेफ्ट इक्वल टू राइट, आई कैन कैलकुलेट दैट. राइट? इससे क्या हुआ, स्पेस और थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया. स्पेस हो गया O(n). Now let's think of a better solution. Can I totally avoid space? Can I do it in constant space? So how many of you were able to solve this in constant space time and O(n) time with no extra space? So Sanjeev, that's what we are up to now. So how many of you were able to do it? Suresh, I know, and your solution was definitely very elegant. I will share a different approach for someone who wants to look at Suresh's approach. Actually, it was good. So you can actually do what he shared in. You can actually check it out in our Discord channel. So Suresh, maybe you can actually point that here as well. So what Gitish did is what I did as well when I solved this question. What you can do is, can I say कि जितना भी मेरा लेफ्ट है वो राइट के तभी इक्वल होगा. लेट्स से आई हैव अ टोटल सम. टोटल सम निकालना तो बड़ी बात है नहीं, इटरेट किया और टोटल निकाल दिया. राइट? यहाँ पे ऑल आई डिड इज कि इटरेट किया 0 से n तक, total plus equals num_i, तो I have total sum. Now let's say कि total calculated है आपके पास किसी भी पॉइंट पे, राइट और लेफ्ट. तो so at any point right plus left plus current should be equal to total. Right? Now if I take this, ये हो गया मेरा total sum. This, do you agree with this? Now if I take this to the left, sorry to the right, ये मैं बस इतना ही कर रहा हूं, उठा के मैंने यहां डाल दिया, मैथ वाला सिंपल चेंज. Now if these two have to be equal, अगर ये x और x दोबारा सेम होगा तो इसका मतलब क्या है, कब इक्वल हो सकता है, जब वो इसका हाफ हो.
अगर मैं ये लूं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कैन आई से 2 इंटू लेफ्ट इक्वल्स टोटल माइनस करंट, अगर लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ उठा के 2 मैं यहां पे ले जाऊंगा, लेफ्ट इक्वल्स टोटल माइनस करंट बाय 2। कैन आई से दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि लेफ्ट जब भी ये हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू डू इट। एंड लेफ्ट तो हम किसी भी टाइम पे निकाल पा रहे हैं, ऑन द गो लेफ्ट निकाल पा रहे हैं, वी डोंट नीड एनी एडिशनल स्पेस। सो अगर मेरा टोटल माइनस करंट बाय 2 इज इक्वल टू लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, इसके राइट और इसके लेफ्ट, इस एलिमेंट के राइट, सॉरी इस एलिमेंट के राइट एंड इस एलिमेंट के लेफ्ट में सम इक्वल है। थोड़ा लेफ्ट राइट का लोचा है मेरा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, आई टेक इट एज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो अगेन राइट इन द कमेंट और डिस्कॉर्ड में डिस्कस कर लो, डोंट फील शाय। हाउ लेफ्ट लूप इज वर्किंग? ओके, सो हाउ डू आई कैलकुलेट लेफ्ट सम, प्रीफिक्स सम, वो एक बार मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। तो जनरली किसका भी प्रीफिक्स सम निकालने के लिए, अगर वेरिएबल में निकालना है या फिर किसी भी एरे में निकालना है, लेट्स से एक एरे में ही निकालना है, तो लेट्स से वी कॉल इट लेफ्ट, एन साइज का ही होगा वो भी ऑब्वियसली। देन ऑल वी डू इज लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू, इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इग्नोर करंट एलिमेंट। तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट? सो व्हाट वी डू इज लेफ्ट ऑफ 0 इज 0, क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। जिस केस में हमें उस एलिमेंट को भी इन्वॉल्व करना होता है तो लेफ्ट ऑफ 0 बिकम्स नम्स ऑफ 0। इतना ही सिंपल है। व्हाट इट इज इक्वल्स टू इज कि जो भी मेरा लेफ्ट में था वो प्लस करंट नंबर, या जो भी था प्लस n माइनस वन, तो नम्स आई माइनस वन प्लस लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन। आई माइनस वन तक क्या है, उससे पहले तक के सारे का सारा का सम, एंड उसमें मैंने वो वाला नंबर भी ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को लेट मी टेक दिस एग्जांपल एंड ट्राई रन करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 से शुरू करेंगे, 1 इज दिस, तो लेफ्ट ऑफ 0 क्या है, 0 प्लस 1, देन इट बिकम्स 1। उस फायदा क्या हुआ, अभी नेक्स्ट में आपको दिखेगा फायदा क्या हुआ। नाउ 2 होता है, आई इक्वल्स टू 2 है, तो लेफ्ट ऑफ 1 विच इज आई माइनस 1 इज 1, सो 1 प्लस दिस नंबर, राइट, विच इज 8। अब इससे फायदा क्या हुआ, यहां तक का पूरा सम मिल गया, आई डोंट हैव टू इटरेट अगेन, एंड मैंने वो वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया। सेम सेम विल गो विद दिस 11, देन 17, देन 22, नहीं 17, हाँ सॉरी 22 खत्म, 3 3 6, 3 3 6, यस। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट prefix sum in any question or anywhere. Aparna, is this clear? Nice. So again, जो हमारा ये सोल्यूशन था, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ चेंज नहीं हो रही है, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिशनल स्पेस। ऑल वी आर यूजिंग इज 2 वेरिएबल्स विच इज टोटल एंड लेफ्ट, दैट्स इट। करंट तो हमारे पास नम्स है ही, so space will become of 1 in this case, right? So moving on to the next question. So ये हो गया आज का second question. So the next question is कौन सा था, majority element. This is a good question.
इसमें टाइम लग सकता है. Okay. Now, how many of you were able to solve majority element question in oven time, oven space? Or in fact, just tell me how many of you were not able to solve it in oven time, oven space. Linear time and constant space में कौन नहीं कर पाया? Me for Suresh and Dipanshu. This is for solving or not solving. Nice, nice, Suresh. कभी कभी ना वो तन्मय भट्ट वाली फीलिंग आती है, ऐसे कोई कभी बीच में ऐसे होगा कि हाँ भाई रैंडमली बोलेगा चैट टोपी चैट टोपी. This is, I'm very new to live discussions, so I feel like कि अभी बीच में कुछ कुछ होना चाहिए. हाँ, so nice. Okay, Abhishek is not able to solve it. Then Akash used extra map. बोट आर्मी, दैट्स करेक्ट. मेरे को भी एक आधा ना बोट बना के डाल देना चाहिए गितीश, कम से कम खुद को ही अच्छा फील होने लगेगा मुझे. सो नाइस ऋषि. देन हु वाज एबल टू सॉल्व इट? मोहम्मद, दैट्स गुड. N square, then I read about Boyer's algorithm. After that, it was done in linear time. That's correct. So, Weber, we are going to discuss Boyer's Moore algorithm only. In fact, after this, I will share you why this works as well. तो उसका मैं एक आपके साथ रीड भी शेयर कर दूंगा, रीड अप आइटम भी शेयर कर ही देता हूँ इनफैक्ट डिस्कॉर्ड में. डू रीड दिस बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि ये समझना कि बायर म्यूरे एल्गोरिदम काम क्यों करती है. तो अपना डिस्कॉर्ड पे मैंने 2 लिंक्स शेयर करे हैं. डू रीड अबाउट इट, ताकि इट्स यू विल बी एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड द पार्ट एज वेल. दैट्स करेक्ट, आई थिंक. Okay, so the question says you have been given, okay, what did I do? Yeah, you have been given an array of integer. You have to find an element which occurs strictly more than n by 2 number of times. और अगर आप ये देखोगे तो इसका मतलब है ये फ्लोर होता है या फिर सील होता है. सील ही होगा ये, नहीं फ्लोर होता है. तो फ्लोर ऑफ दिस नंबर. ओके, नाउ इन दिस केस here 3 2 3 3 occurs twice, so 3 will be the answer. Whereas इस केस में 2 2 2 2 4 3 2 4 6 7 4 occurs, sorry 2 occurs 4 times, which is n by 2. 7 by 2 is basically 3, क्योंकि फ्लोर ले रहे हैं हम यहाँ पे. And since it occurs more than this number of times, 3 number of times, then it becomes majority element. So this is the question. Now let's try to see how to solve it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम, बहुत ही सिंपल. तो आप हैश मैप यूज कर लो. हैश मैप में बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट हैश मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर. इंटीजर में क्या होगा? पहले में होगा एलिमेंट एंड दूसरा होगा काउंट. व्हाई? बिकॉज ऑल वी नीड टू कीप इज काउंट, राइट. एंड हैश मैप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हैश मैप मुझे ओवन लुकअप देता है, तो मुझे ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये एलिमेंट कितनी बार ऑलरेडी आ चुका है. तो ऑल आई डू इज आई इटरेट ऑन एरे एंड look at and store count. That's it. Keep increasing the count, and after that just iterate back again and see if it occurs more than n by 2 number of times. That's it. Just return it there. Is that clear? इसमें कोई डाउट है? I don't want to invest a lot of time in this because we have one more question and 45 minutes already हो चुके हैं. Any doubt, guys? Can we use integer to list? And are you saying all you'll do is just keep appending number
index in the list, and basically size of the list will be the given. Kanwaljit, why do you say list? So if that is the case, I'll just answer that quickly. So you are unnecessarily using extra space here. What you can do is, all you need is count. Why do you need to store indexes and all? So why store extra spaces? So that is why counter, keeping a counter is a better approach than this. Now let's see ki how do we optimize this. Now a lot of few of you were not able to solve this in most optimal solution, so let's try to do that. तो इसको कहते हैं बायर मूरे एल्गोरिथम. What is बायर मूरे एल्गोरिथम? Basically what you do is you keep a candidate. मतलब आप हर टाइम पे एक कैंडिडेट एलिमेंट अपने पास रखते हो. नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली कैंडिडेट का मतलब क्या है. तो आप इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को कैंडिडेट बनाते हो. Now you start iterate, and when you visit candidate, और इसके साथ कैंडिडेट के साथ उस कैंडिडेट का काउंट भी रखते हो. Now when you visit candidate, all you do is count plus. Else if you don't visit, अगर करंट एलिमेंट कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? मेरे को काउंट माइनस करना है. And if at any point count becomes negative, if my count becomes negative, I change my candidate to current element. Candidate becomes numpy and count becomes 1. बस इतना ही करना है. Why are we doing this? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा. ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ऐसा करना क्यों है? एक कैच है यहाँ पे. एक्चुअली 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो तो इक्वल टू 0 आएगा फिर ये. ठीक है. नाउ हाँ ऐसे ही हो जाए यहाँ पे. नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? सबसे पहले ये समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं. कैंडिडेट आ रहा है तो इंक्रीज कर रहे हैं और नहीं. ओके, लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दिस कि चलता है कि नहीं चलता है, और उसके बाद फिर विल सी. ठीक है. देयर इज वन मोर कैच इन दिस. बायर्स मूरे एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम है, विच इज कि ये कैंडिडेट देता है. अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट if it is not given and if there is a possibility of no majority element, तो उस केस में क्या करते हैं? reiterate करते हैं to check if this is actually majority. ये कैसे करते हैं? बस all you need to do is just keep count, and at last just need to identify if count is greater than n by 2. Now sorry, now let's try to dry run this, और फिर उसके बाद इस पे आएंगे कि ये चलता क्यों है. राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इनिशियली मैंने अपना कैंडिडेट को 2 रखा. कैंडिडेट इक्वल्स टू 2. काम करते हैं, 1 करते हैं. थोड़ा सा फन आएगा. एंड काउंट इक्वल्स टू 1. नाउ when I start from here, I iterate from I plus 1 to n. तो ये iterate वाला तो है. नाउ 1 पे सेम कैंडिडेट है, हाँ है, काउंट बिकम्स 2. I come here, नहीं है, काउंट बिकम्स 1. I come here,
नहीं है, काउंट बिकम्स 0. अभी नेगेटिव नहीं हुआ. I come here, count becomes -1. Now here since this count became -1, तो मेरा कैंडिडेट अपडेट हो जाएगा 1 and count becomes 0 again. Then I come here, count becomes 1. फिर मैं 2 पे आता हूं, my count becomes 2, sorry 0. But if you remember, यहाँ नेगेटिव पे चेक करते हैं हम हमेशा. तो सिंस दिस काउंट इज 0, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, आउट ऑफ द लूप निकलेंगे. कैंडिडेट क्या है मेरा 1. एंड एक बार रीट्रेट करके काउंट निकालेंगे, 4 है, ऑल गुड, ऑसम. लेट्स से कि ये 2 था, वापस से वही करते हैं जो पहले था. तो 2 1, सॉरी, यहाँ पे आएगा, दिस काउंट विल बिकम 2. यहाँ पे दिस काउंट विल बिकम 1. एट दिस पॉइंट दिस विल बिकम 0. एट दिस पॉइंट इट विल बिकम -1, sorry. So now at -1 I will change my this will become 0. Here my count will become, this will change because this will become -1. तो मैं अपना चेंज करके वापस से 0 करके 2 कर दूंगा. Here it will become 1 and फिर से मेरा कैंडिडेट 2 आ गया, which is again correct. So this algorithm works. इसमें डाउट है कि चलता है कि नहीं चलता है. क्यों चलता है वो देखते हैं, बट ये चलता है, ये क्लियर है. Come on guys, yes no, quick yes and no. बहुत डिले है क्या? Okay, now let's see कि why does it work. ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, why does it work. तो can I say, first of all tell me, can there be a case that there are two or more, or two majority element? Can there be two majority element in an array? राइट. देयर कैन नेवर बी केस कि जहां पे दो मेजोरिटी एलिमेंट होंगे, बिकॉज हमने अभी डिफाइन किया कि n/2 से ग्रेटर देन बड़ा है वो. तो अगर लेट्स से कि है, लेट्स से कि देयर आर टू और मोर मेजोरिटी एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा? लेट्स से a and b are majority element, size of array is n. so अगर दोनों मेजोरिटी है तो इसका भी n/2 से ग्रेटर होगा ये, एंड b भी n/2 से ग्रेटर होगा. नाउ इफ आई calculate the count, n/2 plus n/2 से इससे ग्रेटर होगा, which is like a plus b का count is greater than n, which can never happen. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है. In worst case a plus b can equal to n. उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस एलिमेंट, उस एरे के अंदर तो रहेगा ना ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. तो दिस इज व्हाई देयर कैन नॉट बी टू और मोर मेजोरिटी एलिमेंट, एंड इन वर्स्ट केस एक ही मेजोरिटी एलिमेंट हो, सॉरी, इन एनी पॉसिबल सिनेरियो देयर कैन बी एट मैक्स 1. 0 हो सकते हैं बट एट मैक्स 1 होगा. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है, एक ही कैंडिडेट हो सकता है. नाउ अगर एक ही एलिमेंट है कैंडिडेट एरे, व्हाट कैन हैपन इज कि वो या तो, अगर मैं अपने एरे को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, एट दिस पॉइंट वो एलिमेंट या तो फ्यूचर में हो सकता है या पास्ट से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, राइट. नाउ इफ माय एलिमेंट, इफ दिस x इज माय मेजॉरिटी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो काउंट होगा, जो कैंडिडेट काउंट मैं रख रहा हूं, वो हमेशा बाकी सबसे ज्यादा होगा.
सिंस n by 2 है तो टोटल ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल दी अदर एलिमेंट. तो जब भी मैं उसके ऊपर इटरेट करके इंक्रीज कर रहा हूं तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा बाकी सारे एलिमेंट से. राइट. कैन आई से दैट? Rishiman will come to your questions, but before that, let me finish my chain of thought. उसके बाद will come to your questions. Right? What I'm saying is कि majority element का count हमेशा since वो n by 2 से बड़ा है तो बाकी सबसे collectively ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं increase कर रहा हूं count को, आई एम ओवर पावरिंग एवरी अदर एलिमेंट. तो जब भी मेरा नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि ये ओवर पावर कर ही नहीं पा रहा है. हो सकता है फ्यूचर में जब मैं आगे एरे टू बी सीन है उसमें आने वाला है तो अपने आप ये टेक केयर कर लेगा क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो एनीवेज नंबर ऑफ टाइम्स कम ही होंगे इससे. राइट. तो दिस इज हाउ, लाइक दिस इज द रीजन दिस एल्गोरिदम वर्क्स कि एरे सीन में या तो फ्यूचर में हो चाहे पास्ट में हो, नो मैटर वेयर द एलिमेंट इज, लाइक लेफ्ट में है, राइट में है, मिडिल में है या स्प्रेड आउट है, total number of counts is always greater than rest of the elements, all the elements, and so this counter increment overpowers every decrement. So this is how we calculate the candidate. हो सकता है थोड़ा क्लियर कम हो. मुझे बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा भी क्लियर हुआ है ये आपको? गाइस यस नो? कहाँ पे हैं हम लोग? बाकी जो भी बच्चे, ओके, आदर्श एंड ऑल, लाइक आई शेयर्ड अ लिंक, उस पर थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करो. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको एक्सप्लेन करना. मे बी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कम गो बैक, थिंक बैक इन अ वेरी इजियर मैनर. मैथमेटिकली मैं एक बार सोचता हूँ इसको कि कैसे प्रूव कर सकते हैं. प्रॉब्ली आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विद यू ऑल. इन द मीन टाइम हर्ष इज सेइंग कि आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू सबमिट माई डेली आंसर्स. हर्ष तो मतलब सुन ही नहीं रहा है और अलग ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है. इतने एफर्ट के साथ मैं समझा रहा हूँ एंड हर्ष इज लाइक कि यार ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ सबमिट कैसे करना है. सो हर्ष, stay on the call till end and I'll try to answer your question. Okay. So okay, now this is what this algorithm is. It's solve majority element in of n time with no extra space. So this is the best possible scenario. Yeah. Let's move to the last question, which is, so Aditya, I totally agree. It's not easy, but ये ना theoretical part है basically. So there are few things that you will have to learn. Theory wise तुम्हें सीखना ही पड़ेगा. Cadence algorithm, Mure's algorithm, Dutch flag, what else? Two sum. ये कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे. नाउ यू कैन यूज दीज इन फ्यूचर. आप इन एल्गोरिदम को यूज करके बाकी चीजों पे बिल्ड करते हो. तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए. मेरे को भी बहुत चैलेंजिंग था. मेरे फाइनल ईयर तक मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज, इट स्टार्टेड टू मेक सेंस. टाइम लगा मुझे, बट नाउ आई एम एबल टू मेक सेंस ऑफ इट एंड आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. अगेन इट टेक्स टाइम. थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बट यस, आई कांट डिसएग्री ऑन दैट पार्ट.
सो ऋषि, लिस्ट ऑफ ऑल दीज एल्गोरिदम्स, तो वही ये पूरा 75 डेज ऑफ चैलेंज है ही वही. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फैंसी थिंग और एनीथिंग. दिस 75 days विल कवर ऑल दोज थिंग्स. तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ प्रोग्रामिंग का कवर करवा सकता हूँ 75 डेज में. What I will cover is like most important questions and algorithms and theoretical part, ताकि you can utilize that in all other questions as well. So this is what this 75 days of challenge is all about. Okay, moving on to the last question. Is there any real life use of all these? So मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे यूज किया था बिफोर आई इनफैक्ट मैं कॉलेज में मैं भी यही सब सोचता था कि व्हाई आर वी सॉल्विंग दिस, इज देयर एनी यूज केस और नॉट. देयर इज एक्चुअल रियल लाइफ यूज केसेस. सो फॉर एग्जांपल, आई वाज वर्किंग विद ब्लैकबक. इन दैट वी वर बिल्डिंग अ मार्केट प्लेस फॉर ट्रक्स. उबर जैसा है, ओपन ऐप, यू फाइंड ट्रक्स. तो नाउ उसमें टाइम उबर से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एज कम्पेयर टू उबर. ट्रक के साइज बहुत ज्यादा होते हैं. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो 4 पहिए वाला, 16 पहिए वाला, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं. वी जनरली डोंट क्लासिफाई दिस एज अ on the number of wheels, but it is classified on the number of or the amount that it can carry. तो टनेज के बेसिस पे क्लासिफाई होता है. एंड नाउ द कस्टमर नीड्स डिफरेंट टनेज, राइट. एंड कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टनेज के अलावा कस्टमर बोलता है कि आई हैव 100 tons, डिस्ट्रीब्यूट, आई डोंट केयर व्हाट ट्रक विल यू गिव मी, आई जस्ट नीड ट्रक्स, राइट. एंड हर टनेज पे एक डिफरेंट रेट होता है और एक ट्रक लेवल पे डिफरेंट रेट होता है. तो ये प्रॉपर नैपसैक हो गया कि इस टनेज का इतना रेट है, मेरे बैग की इतना कैपेसिटी है, हाउ विल आई यूज इट. सो प्रॉपर नैपसैक यूज किया था हमने इन असाइनिंग दीज ट्रक्स टू एक्चुअल कस्टमर्स. सो एक ये यूज केस हो गया. देन आपने, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड दिस, इफ somebody of you is who has some experience will know this, कि पैकेज डिपेंडेंसी होती है. like when you build some big apps, you have to like import lot of packages. for example, java में ही हम लोग lang यूज करते हैं, collection यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में CTL, STL वगैरह यूज करते हैं. वी हैश इंक्लूड ऊपर लगाते हैं ना, हैश इंक्लूड एंड ऑल. तो वो पैकेज इंक्लूड करते हैं. नाउ व्हेन यू इंक्लूड दैट, देयर लाइक एक पैकेज बी पे डिपेंड है, ए सी पे डिपेंडेंट है, डी पे डिपेंडेंट है, डी कैन कम बैक टू बी. इट बिल्ड्स अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. और जब आप उस पूरे प्रोसेस को बिल्ड करते हो ना, इट यूजेस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. तो वो पूरा फ्रेमवर्क मैंने बनाया है अपने प्रीवियस कंपनी में. उस तरह को उस तरह के पैकेजिंग डिपेंडेंसी सिस्टम को बनाया था, नॉट एग्जैक्टली फॉर दैट पर्पस. एंड आई कैन नॉट शेयर एग्जैक्ट डिटेल्स एज वेल. हाँ, कोई भी पैकेज, npm, maven, gradle, everything uses same thing. So I actually built that with one of my colleague. So you used all those things, you end up using these things in real life. What it means, it does not mean कि आपको बाकी चीजें यूज नहीं करनी होती. आपको CS फंडामेंटल बहुत जरूरी है आने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये DSL को जो कर रहे हो इट्स जस्ट फॉर interview purpose. You actually end up using these in real life as well. So yes, there are use cases. हो सकता है आप करो, हो सकता है ना भी करो. 6 साल में मैं कहूंगा मैंने शायद 10, 12, 15 बार किया होगा. 4, 5, 6 महीने काम किया होगा इस तरह की चीजों पे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्टेड आउट है. LRU जैसी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत फेमस है, बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं. तो होता है, बट यू शुड नो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम कैसे कर रहा है. बिकॉज जब बग फंसता है ना प्रोडक्शन पे, तब पता चलता है कि हाँ अगर आता है तो ही सॉल्व कर पाओगे. तो दिस इज व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बाय एंड सेल स्टॉक टू. पहला मीडियम क्वेश्चन है हमारा इस चैलेंज का. तो मीडियम, ऑल्दो मीडियम है बट कंटिन्यूएशन है लास्ट टाइम से. लास्ट टाइम में क्या था, वी वर गिवन प्राइजेस
and we could only sell and buy once. Now हम कितनी बार भी buy and sell कर सकते हैं, but the difference is at a point you can only keep one stock. ऐसा नहीं है कि आप hundreds of stock कर सकते हो, अपने पास इकट्ठे कर सकते हो. So how many of you were able to or not able to solve this question in ON time with extra constant extra space? Rishi is not able to do it. Aparna नहीं हुआ. Dhruv, Gitish, Rudraksh. That's good. So there are very decent number of people who were not able to solve it. Right. Aditya is also not able to solve it. Was not able to solve it. So yeah. Okay. So guys, last कल का क्वेश्चन का सोल्यूशन याद है? व्हाट डिड वी डू? ऑल वी डिड इज कि हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज बाय मिनिमाइजिंग क्या था, बाय प्राइस. हमने अपने बाय प्राइस को कम किया तो प्रॉफिट अपने आप मिनिमाइज हो गया. दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे. राइट. ये क्यों किया, मिनिमाइज क्यों किया? क्योंकि हम लोग एक ही बार कर सकते थे. नाउ इफ आई कैन सेल इट एंड बाय इट मल्टीपल टाइम्स, इसका मतलब क्या है कि मैं कभी भी खरीद के अगर बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूं एंड दोबारा ट्राई करूं कि वो प्रॉफिट दोबारा मिल जाए, तो हो सकता है बेटर मेरे को प्रॉफिट मिले. कल कितना था इसका आंसर? इसका कल आंसर था 5. 1 पे खरीद के 6 पे बेचा था तो 5. आज अभी 7 कर सकते हैं, मतलब 7 तो प्रॉफिट कमा ही सकता हूं मैं. राइट. नाउ व्हाट आई डू इज, इन दिस केस मैं अगेन मिनिमम पे बाय करने की कोशिश करूंगा एंड मैक्सिमम पे बेचने की कोशिश करूंगा. बट नाउ आई विल ट्राई टू सेल इट एंड बाय इट एट लोकल मिनिमा इंस्टेड ऑफ ग्लोबल मिनिमा. ग्लोबल मिनिमा क्या होता है? पूरे एरे का सबसे सस्ता. वेरएज लोकल मिनिमा क्या होता है? जब भी मुझे कुछ मिनिमा दिखा, मतलब राइट में बड़ा है, लेफ्ट में बड़ा है, उस एलिमेंट के लेफ्ट और राइट दोनों में बड़ा है, तो लोकल मिनिमम हो गया. तो मैं उस पॉइंट पे खरीद लूंगा एंड आई विल सेल इट ऑन अ लोकल मैक्सिमम. जैसे 5 हियर, 1 एंड 3. क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि आई नो कि अगर मैं आज बेच रहा हूं एंड इमीडिएटली कल खरीद लूंगा, तो जो भी डेल्टा आया वो तो मुझे प्रॉफिट मिल ही रहा है ना एक्स्ट्रा. दोबारा खरीद के दोबारा बेच देंगे. विल सी कैसे कैसे जाता है. सो दिस इज व्हाई इट विल वर्क. So here today what we do is buy at local minima and sell at local maximum. बस ये प्रोसेस रिपीट करते जाऊं, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करूंगा उतने ज्यादा मेरे को पैसे मिलेंगे. सिंपल है. राइट. और मैं हमेशा सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की कोशिश करूंगा इन एनी स्टॉक. लेट्स ट्राई टू डू दिस हियर. यहाँ लोकल मिनिमा क्या है? 1. लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में बड़ा है. लोकल मैक्सिमा क्या है? 5. क्योंकि अगर मैं 3 पे बेचूंगा तो मैं दोबारा नहीं खरीद पाऊंगा पूरे एरे में. 5 पे ही खरीद पाऊंगा. सॉरी, दोबारा खरीदूंगा तो आई विल ऑलवेज बी इन लॉस. तो आई विल सेल इट एट 5. हियर आई विल नेवर बाय एनीथिंग, क्योंकि मेरे को लोकल मिनिमा मिला ही नहीं. इन एनी केस पहले तो बाय करेंगे ना सेल करने से. तो दैट इज वाई लोकल मिनिमा विल कम फर्स्ट एंड लोकल मैक्सिमा विल कम लेटर. पहले लोकल मिनिमा पे खरीदा, लोकल मैक्सिमा पे बेचा, मूव ऑन. लोकल मिनिमा पे खरीदा, लोकल मैक्सिमा पे बेचा, मूव ऑन. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. क्लियर हुआ ये? थोड़ा सा हो सकता है इट माइट नॉट हैव मेड सेंस टू यू, बट एनी चांस दैट this makes sense and is it clear to you कि why will this work?
Yes, valley peak and dip दोनों is local maxima and minima. Dry run, okay. Let me dry run it again, although I've done it once. So in this case, so we'll start from here. Local minima क्या है? 1, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में उससे बड़े हैं, तो मिनिमा पे खरीद लिया. देन 5, 3 उससे छोटा है, 1 उससे छोटा है, 5 मेरा लोकल मैक्सिमा है, इस पे मैंने बेच दिया. नाउ 3 अगेन 3 मेरा लोकल मिनिमा है, क्योंकि मैं उससे नेक्स्ट खरीदूंगा. अगर इस पे खरीद के हाथ के हाथ बेच दूंगा तो 3 का प्रॉफिट मेरा वैसे एडिशनल हो गया. तो 3 पे लिया. देन 6 पे आया. 6 क्या है? लोकल मैक्सिमा. यस, इट इज लोकल मैक्सिमा. देन आई विल सेल इट. 4 पे आया. आई विल बाय एंड देयर इज नथिंग टू सेल, तो मेरे ये ट्रांजेक्शन वॉइड हो गई. नाउ लेट्स से द एरे हैड बीन 7 भी होता. तो अगेन 1 मेरा लोकल मिनिमा है, खरीदा मैंने. 5 पे मैंने बेचा, क्योंकि 5 लोकल मैक्सिमा है, दोनों से बड़ा है. 3 पे अगेन खरीदा. 6 पे नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं 7 पे बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट. तो 6 पे नहीं बेचा, 7 पे बेचा. I sell it at 7. I gain the profit of 4 and move on. So why am I selling it local maxima? Because if I keep it, there may be a possibility that I can get a better profit in the future. For example, here, if I could have kept it at 5, I would have sell it at 7. But I can make more money. I can make instant money, and then regain my profit by buying it again. Because now there is no limit on number of mines. So this is the reason. ध्रुव नागर, आपको क्लियर हुआ ये? Okay. Suresh, you're saying ki what if I sell it on 6 and buy it again? Then there is no point, right? It's not going to make any difference. मुझे 3 पे खरीदना था, वो इंपॉर्टेंट है. I can sell it on 6 and buy it again, then sell it on 7, buy it again. There is no point in doing that. तो मैं डायरेक्टली 7 पे ही बेचूंगा, because that will give me profit and I can only transact, like I'll need to transact once, that's it. So what is the time complexity of this? What we're doing is going to this, then moving on, buying at this, buying at this, then moving on. So the overall, all we are doing is like iterating out over this array once. So the time complexity is of n. As simple as that. Is this clear? Anyone who does not understand it as of now? Okay. So that covers all of our questions. So guys, keep it up. Really appreciate you working hard. This will be very beneficial for you in the long term. I can guarantee you that. First of all, special, like I can see you guys like Suresh. I see a lot of interaction. Suresh doing a lot of helping. Rishi. Then there are few names that I can totally relate. They interact a lot in the community. For those who do not,
Don't feel shy about interacting in the community, because that is not going to have any bad impact on your profile or yourself. I can totally understand being an introvert, like it's very hard to interact. It's very hard. Like we feel like कि क्या ही करना है, छोड़ो यार, क्या time waste करना है इसमें. But believe it or not, like it's very helpful. So again, I will say this one more time. Don't wait till the end of the day to clear your doubts. Ask it in the Discord community. I will answer. Someone else will answer if I am not available at that particular moment. I always check all the 99% of the messages is what I check, and I reply to doubts and unsolved questions every time. So you can actually ask that in Discord community. Now, don't mind sharing all these things on your LinkedIn profile, Instagram, Twitter, wherever you like. Share the word. Help me reach out many people as possible, so that you have a better community as well. And I will keep on trying. Basically, I will keep on trying to bring more opportunities, more content, good quality things in the community. Like today I introduced Dhruv in the community. He's hiring for his startup. So there are a lot of companies, a lot of good startups hiring as well. I will always keep on trying on bringing them on board, so that you guys have internship opportunity, you guys have full-time opportunities. If there is something specific, do mention it in the Discord community, and I'll try to give my best. I will try to so we already have people from almost all the top companies, so referral is definitely going to be there for people who are working or consistently doing it. I can guarantee that if you are ready, if we feel like you're ready and you have actually did effort in the last 75 days or 60 days or so, you will be given a referral. So don't worry about that. If there is anything else, you can also mention that in the comment, in the description, or sorry, in the comment on or on the Discord community. I will try to help. Again, thank you so much for being here, and I will try to answer all the questions that I left. So one question is majority element is that is after sorting in majority element array. If yes, if the array is sorted, then it will always be at a n by 2 index of n by 2th index. And this is a solution to the second question that is there on a majority element, which is find a majority element in a sorted array. This is a very important observation in that. So yeah, guys, one like obviously for tomorrow's question is Pascal triangle, remove duplicate from sorted array, merge interval, threesome. So that will be posted as well. But so yeah, now I have 10 minutes. Let me see if I have any work meeting or anything. So no, I have 10 minutes. I can, if you guys want to chat with me on any random topic, I am open to that today. So if you guys want to talk about anything at all, feel free to talk about it. If you want to do it on Discord, be my guest. Don't worry. But yeah, again, do share and spread the word. One thing before you all leave, guys, don't forget to fill the daily progress form. I check that every single day. In fact, I check that like multiple times in a day. Also I have that open right now as well. Like there are 66 response till now, and out of which most of them are day one. I did not put any filter or any formula on my Excel as of now, but yeah, I'll do that. I check that. I see like there are people who are doing it every single day. I see people who are posting on LinkedIn as well. And I am observing all these things. Even if I don't say it, I am observing these things, and these things matter. Like if you are posting every single day, you will be given more preference. I'll not be dishonest with you. So yeah, make sure that you fill that form if you are able to uh, solve that, because it is not possible for me to keep a track of every single message, and this is the only way me and the entire team can keep a track that you are solving question every day.
where is daily progress form? So now that's a thing that I've been asked like so many times. What I will do is now onwards, I will start adding that to the videos as well. Okay, where did I enter? It is present in our community, but yeah, I will daily progress. So now on, you will be seeing it on every single video that we like related to daily. So yeah. So very good question, Aditya. Things that you need to do apart from DSA. So DSA is important, but and I am also focused on DSA because this is something that you need to do to clear few rounds. But uh, to excel in your current job or to become a better software engineer, you need much more than DSA. You need to understand how actually the computer actually works, which is computer science fundamentals. You need to be very good at operating systems. You need to be very good at computer networking. You need to be having a good understanding of compiler, all these things. So don't take that lightly. Learn all that things. Very important. Like it's very important. You don't have to listen to all your professors and all, but जो concepts है ना, at least India की जो education है, it's very good. It's not super bad is what I'll say. So do all those things, like make sure that you have very good command on CS fundamentals, DBMS, operating system, computer network, and everything. One good thing is we also have all the structured content available. इसके description में भी है. You can find that in description, and you can also find that in the GitHub repository that I maintain myself. So don't like lose on that. So focus on CS fundamental for sure. Okay, yeah. Sanjeev ne, I think you asked this yesterday as well. Have you met Mr. Zuckerberg? No. When I joined like 3 weeks back, though, abhi to I haven't even met anyone like apart from people I already knew from my previous companies या फिर college. I haven't met anyone apart from that. But Zucker, like that's a very big name. Like he's the CEO of the company. So I don't know. Maybe in some party or something we'll end up meeting him. But as of now, no. And I don't know if that is ever going to happen as well. Number theory, combinatorics. From where I think Geek for Geeks and Lead Code are good resources. They have everything. Yeah. So that should not be an issue. One question is, when are we getting system design from you? Okay. So yeah, DSA is something that I am doing just for the sake of doing, honestly speaking. मैं बोलता नहीं हूँ ये, but this is the case. I really love to work on system designs. I really love to study, teach about system designs. So once we finish this, I've already planned out system design in a way कि उसमें learning भी हो और interview का भी हो. That is not going to be a interview centric challenge course. I don't know what will I call it, but that is going to be very learning specific course that will involve teaching and regular questions and assignments and all. So be there, like keep stay posted, and I will share system design things like it, and it will be good for almost all the levels. Like even if you are college higher, you may few things may not make sense, but a lot of things will make sense. But if you are a senior engineer, it is going to be very important for you. I did this question 3 months ago, but tried again. I only able to do brute force technique only. I cannot remember this question. So Dhruv, yeah, if this is happening, then there is something definitely wrong. You need to focus on the basics first. आप इसको क्वेश्चन की तरह मत देखो. आप इस क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चन लाइक दिस जो बायर मोरे एल्गोरिथम है, उसको एक थियरी की तरह पार्ट की तरह करो.
फिर उसकी सिमिलर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, लाइक मेजोरिटी एलिमेंट है, मेजोरिटी एलिमेंट के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा, आपका वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली यूज, दैट सॉलिडिफाइड thing will remain with you all the time. Second thing that you can do is, what I always do is, I always check alternate solutions present on lead code. This is the reason I love lead code the most, because you can actually look at multiple solutions there. So do check multiple solutions, all the solutions possible. Two, one more thing that you can do is, you can write your own, even if there are hundreds of posts, write your own post. उससे क्या होगा, आपको थोड़ा और सॉलिडिफाई हो जाएगा कि हाँ, एंड राइट इट इन वर्ड्स एज वेल, कि हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये किया. बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड anyone else, like I am trying to teach you, I need to work on a lot of things. I need to make it very simple as well. So उससे क्या होगा, मेरे को भी याद रहता है वो. अब अभी मेरे को जब बायर्स मूरे एल्गोरिदम का ये पता पूछेगा ना कोई कि क्यों काम करता है, तो आई नो दैट. सो ट्राई टू राइट इट एंड submit your own solution in the discussion channel forum of lead code. And one good thing that this community is providing you is the Discord channel. तो वो यूज करो यार, मतलब जितना हो सकता है यूज करो. That is going to help you a lot. What is your experience working in India is better or working outside of India? So यार, I don't have working like any experience working outside. अभी I just have been here for less than a month. एक महीना भी नहीं हुआ है. नहीं, एक महीना क्या, अभी 3 वीक हुए हैं. Today like I completed 3 weeks. तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. 3 वीक में कुछ नहीं पता चलता है. उसमें से 1-1.5 वीक तो इतना ठंड था यहाँ पे, मेरी हालत खराब थी. तो कोई आई डोंट नो like experience as of now. Obviously I will be able to answer that after a year or so. But there are few things that I really miss about India, especially all these things, like when I talk to you all, like the timing उससे थोड़ा सा मेरे को hard to manage होता है, because this is my middle of the day. And after a while it will be really difficult for me to take these online live classes and all slash live sessions, whatever we want to call it. That, and apart from that, the basic luxuries जो हमें ऐसे हम for granted ले लेते हैं, maids and cooks and Uber. Like Uber भी एक बहुत बड़ी luxury है यहाँ पे. It's very hard to afford Uber. buses भी बहुत महंगी हैं. Trains, buses, they are very expensive. स्पेशली अगर आप दिल्ली से आ रहे हो ना, जहाँ पे इतना इतना अमेजिंग ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो इतनी अमेजिंग है. यहाँ की मेट्रो ना हमारी रेल जैसी है. इतनी इतनी आवाज करती है, सिर दर्द कर जाता है जब भी मेट्रो में बैठते हैं. तो देर आर लाइक वेरी ओल्ड मेट्रोज, 70s 80s की मेट्रोज चल रही हैं यहाँ पे. तो it's good in a lot of sense, but there are very very good things in India जो I've been missing. चटपटा खाना, I miss that a lot here. अभी तक I live in central London, तो यहाँ पे तो यार बहुत ही कम अच्छा खाना मिला है मेरे को अभी तक बाहर का. एंड इफ यू आर वेजिटेरियन तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है आपके लिए. थोड़ा तो, बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लोग या तो वीगन है या फिर सब खाते हैं, मतलब बिल्कुल लिटरली सब खाते हैं. तो ये मेरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है. मतलब वीगन तो बहुत ही बेकार होता है. उसमें ना तो दूध जैसी चीजें होती है, मतलब चीज वीज डालते नहीं है, कुछ अच्छा कुछ डालते नहीं है, और फिर सीधा बीफ पे जाते हैं लोग. ऑल्दो आई ईट नॉन वेज, बट आई डोंट ईट बीफ, आई डोंट ईट पोर्क एंड ऑल. तो इवन फॉर मी इट्स अ बिट हार्ड. तो या, when will it start tentatively? System design, July, August is when will it start, because इतना time नहीं है कि I can take 2 or more series in parallel. Who cooks food for you now? How do you manage food work from end this session? So I literally cooked my like I live with my wife, so she also does a lot of work with me. So basically she and I, we would do it together. So I literally ate just before this session, and we cooked
we cook our own food, we clean our own thing. There is no such thing as ki aur koi there is no one going to come to cook and clean for you, so you have to do it. So yeah, Adarsh, I'm not going to tell you my package, or I'm never going to discuss monetary aspect ever on. At least I can say like ever on this channel as of now. So I am never going to discuss or say कि हाँ कैसे पैसा क्या है. Salary negotiation, I can help you with salary negotiation. I can tell you the tricks to salary negotiation, but I'm not going to discuss actual numbers ever with anyone. So yeah, okay. So guys, thank you. आई थिंक वहां पे 11:30 बज गए होंगे. यस, 11:30 PM. Thank you so much for staying in till so late. Probably we can have a normal chat. कल सैटरडे है, मेरी छुट्टी है, संडे भी है, छुट्टी है. Probably we can have a normal chat as well along with this. Probably we can do it in the afternoon or and all. So see ya. If you want to do that, please let me know in the Discord channel, because as of now I don't have anything planned as such. But if you want to catch up with me on live, or like, I'll prefer that on Discord, so we can do that as well. Thank you. See you in the next video, which is tomorrow, and do solve the question every single day. Bye bye.